Hello everyone, welcome back to my channel The Creative Mee. Guys, today's video is all about Boho Decor. Boho Decor is actually different kind of patterns, different kind of color, etc. So चलिए वीडियो शुरू करते हैं. And if you are new to my channel and you haven't subscribed my channel yet, please do consider subscribing my channel. For this project, you need canvas or you can use paper too. But I think canvas will be better than paper. So I am using canvas here. So I am creating some patterns on the canvas. I am creating this pattern with the proper measurement. आपको यह पैटर्न बहुत ही धीरे एंड प्रॉपर मेजरमेंट के साथ करना है, अदरवाइज यू विल बी नॉट सेटिस्फाइड विद द एंड रिजल्ट. Now I am done with my pattern, as you can see. इसी तरीके से मैंने दो और पैटर्न क्रिएट कर लिए हैं. Now I am applying black color in this patterns. पहले अगर हम कलर से बॉर्डर क्रिएट कर लेंगे तो कलर करना हमारे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा.
As you can see how slowly I am applying the color. As you can see how I am applying the color. सबसे पहले मैंने बीच के बॉक्स में कलर कर दिया है, देन उसके बाद के ब्रैकेट को मैंने छोड़ दिया है, एंड देन उसके बाद वाले ब्रैकेट में मैंने कलर किया है. बेसिकली आई एम अप्लाइंग द कलर इन अल्टरनेट बेसिस. एंड देन मैं यहाँ पेंटिंग्स पे वार्निश का स्प्रे कर रही हूँ. अगर आपके पास नहीं है तो इट्स ओके, आप इसको एज इट इज़ लगा सकते हैं. इसके बाद मैं यहाँ कैनवास को फ्रेम में फिक्स कर रही हूँ. अगर आपके पास वुडन फ्रेम नहीं है तो आप कार्डबोर्ड की फ्रेम भी बना सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ बनाई है. कार्डबोर्ड फ्रेम में कैनवास को फिक्स करने के लिए कैनवास के एंड पे फेविकॉल को लगा देना है, एंड देन फ्रेम को इस तरीके से स्टिक कर लेना है. पर्सनली आई लाइक दिस पेंटिंग सो मच. आपको ये पेंटिंग्स कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. आई होप यू एंजॉयड द वीडियो. इफ़ यू डू सो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. थैंक यू. मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय बाय.